Assalamu alaikum. This is Professor Dr. Sumbul Tariq, and I'll continue with my next lecture, which is adverse drug reactions of common drugs. Basically, I was asked to present to you the adverse drug effects of common drugs, but again, it is a big topic, and we'll just go on. I'll just go on to discuss the adverse drug effects first and say something about all the effects that can occur when you're giving a drug. As you know, drugs can cause a multitude of side effects, or isme basically some are expected, some are unexpected. Okay, na? I don't know, there's something wrong with my slide here, but we'll just, as asked by CBSP, I'll just go on to say that whenever I was teaching you antimicrobial drugs, I was kept on saying that we should try to give drugs in a minimum quantity so that we can avoid adverse effects. This holds true for every drug. Here, I'd just like to say that if you've read homeopathy or anyone has any interest in that, so basically they believe that all drugs in small quantities, all things in small quantities are beneficial, and the same things in higher doses are poisons. ठीक है, तो उनकी थ्योरी है कि जितना कम कोई चीज यूज करो उतना ही ये बेनिफिशियल होती है, और जितना ही आप ज्यादा करते जाते हो तो it becomes poison for the patient. So basically अगर आप देखो तो when you're giving someone a drug, what happens is okay, you know the chemical nature of the drug, you know the drug has certain particular effects on the body. इसका mechanism of action हमें आता होता है, pharmacokinetics, dynamics, हर चीज. तो whenever you start giving the drug, you can predict कि भाई एक तो ये effect है इस drug का कि जब मैं ये दूंगा तो let's say we'll take a very common drug, that is acetyl salicylic acid, aspirin. ठीक है, I'm sure all of us have had aspirin, aspirin के नाम से या otherwise at some time in our life. तो होता क्या है कि when you're giving aspirin, you know कि if you give it 325 milligram तक 75 to 325 milligram, तो हमें इसके pharmacokinetics पता है, it is going to be an antiplatelet drug. Then the next is that you give it 500 to 1 gram, 500 milligram to 1 gram per day दे रहे हो या stat ले रहे हो, तो you want to relieve pain, analgesic effect के लिए दे रहे हो या antipyretic effect के लिए going to give it. And then someone has rheumatoid arthritis में, if you want to use it as an anti-inflammatory, up to 4 grams दे दोगे. ठीक है, अब what's happening here is कि आपको पता है कि ये small doses में, because you know the pharmacokinetics of the drug, तो you know it is going to be antiplatelet. ये prostaglandin A2 की जो है production कम कर रही है, and therefore platelet aggregation कम होगी. तो you're going to give it in unstable angina, angina pectoris, इस तरह के कामों के लिए दे दोगे. When you increase the dose, तो आप इसको antipyretic के तौर पे दे रहे हो, analgesic के तौर पे दे रहे हो to relieve pain. And then for the anti-inflammatory effect, आप इसको और भी ज़्यादा dose में दे रहे हो. अब इस drug के साथ you already know that if you give it on an empty stomach, it will cause gastritis, जो तुम लोगों के सबसे favorite side effect है, which is nausea, vomiting, diarrhea, जो कि मेरे patients ये जब students आते हैं वाइवा में तो NVD भी कह देते हैं, which is normal vaginal delivery. मगर what happens is कि ये nausea, vomiting, diarrhea जो है ये इस drug के साथ it is definitely a side effect. अब side effect क्या है? Side effects are effects which occur at normal doses of the drug, and they are there. You can't do anything about them. ठीक है? तो आप जब कभी भी किसी को drug देते हो, तो you should know कि there are certain effects which will occur whatever you do. Gastritis with aspirin,
हर एक को पता है कि ये होगा, ठीक है। फिर विद द सेम एस्प्रिन, जब हम छोटे थे तो हमें बेबी एस्प्रिन माँ बाप दे देते थे, व्हाट वी यूज्ड टू हैव इट, वो ऑरेंज फ्लेवर होती थी, इट वाज वेरी नाइस, बट देन with time we came to know that it can cause Reese syndrome in children who are suffering from viral infection. तो अब जब से वो पता चला तो it is contraindicated in children below 12 years of age. उसकी जगह आप उनको ibuprofen दे दोगे, आप उनको acetaminophen देते हो, आप उनको mefenamic acid दे सकते हो, कुछ भी और दोगे स्वाय एस्प्रिन के। तो now with time we came to know that साइड इफेक्ट्स ऑफ द सिंपल एस्प्रिन, जिसको हमने नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया तक समझा हुआ था, उसमें ये एक्यूट हेपेटिक निकोसिस कॉज कर सकते हैं, रीस सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, जिसमें फल्मिनेंट हेपेटाइटिस डेवलप होके द लिवर तो एक मुझे ये क्लासिफिकेशन अच्छी लगी थी। बेसिकली आप लोगों ने जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि आई शुड टीच यू द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। अब मसला क्या है कि कॉमनली यूज्ड ड्रग्स भी इतनी ज्यादा हैं, देयर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू नॉट गो एंड वेयर टू गो। तो आई जस्ट लुक थ्रू अ फ्यू वो, और ये अच्छी है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग अफेक्ट्स, विल्स एंड ब्राउन की है। इसमें टाइप ए है ऑगमेंटेड, टाइप बी बिज़ार, टाइप सी केमिकल, टाइप डी डिलेड, टाइप ई exit या end of treatment के side effects, type F is familial, type G is genotoxicity, and type H is hypersensitivity. अब अगर हम इसके मुताबिक चलें तो augmented या type A reactions जो होती हैं, they can be predicted from the knowledge of the pharmacology of the drug, and they are dose dependent, and they can just be alleviated by a dose reduction. मतलब ये है कि अगर आप किसी को ड्रग दे रहे हो, उसके आपको फार्माकोकाइनेटिक्स पता है, आपको पता है इस ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या है, तो यू नो कि कौन सा साइड इफेक्ट होगा। इसमें एंटीकोगुलेंट्स का एग्जांपल है, यू आर गिविंग एंटीकोगुलेंट्स बिकॉज यू वांट टू ओवरकम अ कोगुलेशन फेज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसको डीवीटी हो गया या उसके प्रोस्थेटिक वाल्व्स हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन में है, तो यू आर गिविंग हिम प्रोफाइलेक्सिस। तो जब भी आप कोई एंटीकोगुलेंट देते हो, चाहे वो हेपरिन हो, चाहे वो वन ऑफ द फैक्टर 10 इनहिबिटर्स जो आजकल लेटेस्ट आए हुए हैं, राइवरॉक्सीबैन और ये वाली चीजें हो, चाहे वो वार्फरिन हो, चाहे वो चूहे मार गोलियां खाकर आ जाता है, बिकॉज दे आर आल्सो एंटीकोगुलेंट्स वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर किलिंग ऑफ ऑल द रोडेंट्स। तो उसमें सब में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ब्लीडिंग होगी, ठीक है। So this is one of the side effects, which is adverse effect of the drug, which is going to be there. फिर इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स आप किसी को देते हो, you know that you're giving them beta blockers. तो because you know the pharmacology of the drug, propranolol दे रहे हो, atenolol दे रहे हो, labetalol, alpha and beta both है, इन सब के साथ you know the patient will have a decrease in heart rate, bradycardia, and decrease in heart rate below 60 is bradycardia incidentally, okay. फिर we have the type B reactions, which are the bizarre reactions. That means you do not really expect them to happen. They cannot be predicted by the pharmacology of the drug, and they are not dose dependent. अब dose dependent का ये मतलब था कि एंटीकोगुलेंट अगर आपने वॉर्फरिन 5 मिलीग्राम किसी को दे रहे थे और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यू डिक्रीज द डोज 2.5 कर दोगे, INR उसका देखते रहोगे, विटामिन के दे दोगे, उसको स्टॉप कर दोगे। अब ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें यू डू नॉट हैव दैट फैसिलिटी कि भाई ये रिएक्शन हो गई है, अब हम उस ड्रग को रोकेंगे तो ये रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है, इट विल हैपन। तो इसमें बेसिकली जैसे कि होस्ट डिपेंडेंट फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड दे प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू वेरियस ड्रग इफेक्ट्स, ड्रग एडवर्स इफेक्ट्स। इसमें फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन के साथ टाइप 1 hypersensitivity reactions are very common, and the patient can have anaphylaxis, and anaphylaxis if not treated on time causes death, ठीक है। तो इसमें IgE जो है immunoglobulin वो रिलीज हो जाती है, and it causes degranulation of the basophils, the mast cells, or the patient if not treated properly will die. And anaphylaxis with penicillin is such a big issue. ये
कहते हैं 3 to 4% लोगों में हो सकता है कि you have to always give a test dose to predict कि इस पेशेंट में अगर जरा से भी hypersensitivity के chances हैं with penicillin, you're not supposed to give the drug. You have to avoid the drug because once given, it can't be taken back. फिर anticonvulsants में sometimes there's hypersensitivity reactions can occur. इसी तरह sulfonamides के साथ severe hypersensitivity type 2, 3, 4 तक भी होती हैं, ठीक है? तो all of these are bizarre reactions which can occur with various drugs. Then we have the type C, the chemical reactions. The chemical reactions इसलिए इसको कहा गया है because if you know the pharmacokinetics of a drug, you know कि आपने किसी को drug दी और वो drug जो है वो हमारे system में जब जाती है, it is broken down and metabolized and excreted from the body. When it is metabolized, it can turn into a metabolite which is more dangerous than the drug itself. For example, paracetamol acetaminophen is the name of the drug. Paracetamol के अंदर जो use होती है, if it is given to a patient and if it is given in doses more than normal, यानी हम 2 गोलियां paracetamol कहते हैं खाते रहो हर 4 घंटे के बाद, मगर let's say कि 10 गोलियां खा लो तो it can cause severe hepatotoxicity क्योंकि it is converted in the liver into an active metabolite which is hepatotoxic. और अक्सर मैं वैसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ मजाक करती होती हूँ कि अगर you go and try to kill yourself, suicidal intent, खासतौर से हमारे यहाँ जब stages हो रही होती हैं उससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स में आ रहा होता है, तो if you go and try killing yourself by having an overdose of diazepam, diazepam is one of the safest drugs that I know. 5 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम की वैलियम की गोली से लेके 240 मिलीग्राम भी एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे जब यूज करो तो इट इज टॉलरेटेड, बहुत हुआ सोगे और फिर उड़ जाओगे। मगर पैरासिटामोल 10 टैबलेट्स टू 20 टैबलेट्स अगर कोई लेता है तो दे कैन किल देमसेल्व्स अननोइंगली और नोइंगली व्हाटएवर। तो ये टाइप सी या केमिकल रिएक्शन वाली एडवर्स इफेक्ट है। देन वी हैव द टाइप डी और डिलेड रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट्स। Delayed reaction adverse effects occur with drugs which are taken over time for a long time. जैसे let's say कि किसी को TB है तो वो कम से कम 9 to 12 months के लिए ट्रीटमेंट लेगा, और किसी के कोई acute lymphocytic leukemia हो गया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, कोई किसी का ट्यूमर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो महीनों पे लेते हैं, सालों पे लेते हैं। अब जब वो ये चीजें ले रहे होते हैं तो जो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, the drug can accumulate in the body. आपको पता है we need about 5 half lives of a drug to be completely eliminated from the body. अब अक्सर जो डोजिंग इंटरवल होता है वो हमने पहले से सोचा होता है कि ये डोजिंग इंटरवल रखेंगे so there is no drug accumulation, but certain drugs do accumulate. So in patients who are getting chemotherapy, that is anti-cancerous drugs, secondary tumors can occur. Secondary tumors are also very common with infliximab या ये जो tumor necrosis factor alpha blockers हैं जो हम यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ना सिर्फ उसमें secondary tumors होते हैं बल्कि इसमें latent tuberculosis भी दोबारा से हो सकती है। Then phenytoin, if it is given during pregnancy, so phenytoin has a teratogenic effect. Warfarin, if it is given during the first trimester of pregnancy, it also has a teratogenic effect. फिर antipsychotic drugs basically डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ इंटरफेयर करके साइकोसिस को इंप्रूव तो कर रही होती हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव द एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, जिनमें कुछ तो उसी वक्त के लिए होते हैं एंड दे गेट बेटर, लाइक प्रोलैक्टिन इंक्रीज की वजह से गैलेक्टोरिया और ये चीजें, मगर टार्डिव डिस्काइनेसिस कैन स्टे फॉर इयर्स। फिर एनाल्जेसिक्स व्हेन दे आर यूज्ड वेरी वेरी कॉमनली इन पीपल जो नॉर्मल हेडेक के लिए रोज खा के पेनाडोल ब्रूफिन कुछ भी खाते रहें तो analgesics are nephrotoxic and after some time the patients go into chronic renal failure. इसी तरह बहुत सारी examples हैं and all of these are delayed type reactions या type D reactions. Then we have the end of treatment reactions. End of treatment reactions can occur अगर drug को abruptly आप withdraw कर जाए, ठीक है? जब मेरे पास कोई patient आती है जिसको blood pressure होता है, hypertensive patient, I ask them, are you a compliant patient or not? And if they say they forget taking drugs, I don't give them
any one of the beta blockers. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मगर beta blockers अगर आप देते हो atenolol वगैरह and the patient is not compliant and they stop taking it, तो there can be abrupt increase in blood pressure. ठीक है ना, rebound hypertension cause करते हैं. Phenytoin withdrawal से serious हो सकते हैं. Phenytoin which is being used for serious, अगर वो बीच में छोड़ देते हैं. इसी तरह steroid अगर less than 21 days कहते हैं it is safe to just stop them abruptly. But if the patient is taking steroids for a very long time, for let's say asthma or for rheumatoid arthritis or for some other collagen vascular disorder, और आप उसके steroid को अगर वो 21 days से ज़्यादा लेते एकदम वो withdraw कर लें, तो adrenocortical insufficiency and Addisonian crisis हो सकता है, which can be life-threatening. Then we have the adverse effects को अगर आप उसका करो, तो we have effects which are unwanted but often unavoidable. These are called side effects. ठीक है, और they can be predicted from the pharmacological profile of a drug, and they are known to occur in a given percentage of recipients. जैसे मैं aspirin की बात करी थी, हर एक के पेट में दर्द होता है. Then side effects based on the therapeutic use. इसमें atropine, which is used for pre-anesthetic medication, जो anticholinergic drug है, it causes dryness of mouth. That is why it is used. मगर the dryness of mouth occurs. इसकी तरह ही acetazolamide अगर दें, और इसमें acidosis is a side effect. So therefore, these side effects will occur whatever you do, and you just have to know if you want to give a drug or not. If it is essential, you have to give the drug. And if you're giving a drug, you can either educate the patient about the side effects or just go ahead and do it. फिर side effects का एक फायदा क्या हुआ कि occasionally the adverse effects can be exploited to develop entirely new drugs. ठीक है, इसमें what happens is कि a drug is used for, let's say, यहाँ पर जो example है minoxidil is a vasodilator. It used to be given for acute hypertensive emergency treatment, यानी किसी का blood pressure जो है वो नीचे वाला 120 से ऊपर जा रहा है और patient comes in with a very high BP, so it is one of the vasodilators which can be given. So people who are using it came to know that it causes unwanted hair growth, जिसको hypertrichosis कहते हैं. तो hypertrichosis का जब पता चला तो उन्होंने इसको रिसर्च किया, तो पता चला कि topical application of minoxidil can also increase hair growth, और male type baldness में it is available now, और Rogaine के नाम से it is available at topical preparation. वो जो topical होने की वजह से blood pressure पे असर कोई नहीं होता, मगर it causes growth of hair up to 3 months के लिए जब लगाओ तो the hair growth comes back and it is being used. इस तरह sildenafil जो था anti-inguinal के तौर पे it was used, but they came to know it causes erectile dysfunction में, it causes erectile function improval, and now it is used for a drug, one of the drugs which is used for erectile dysfunction. Then we have secondary effects. Secondary effects are effects of the drug which occur because the patient is using a drug for a certain disease, or you prescribe the drug for a certain infection or a certain pathological process. But because you're prescribing the drug and they are very effective, they can have other side effects. और इसमें tetracyclines के example अगर हम लें, तो suppression of bacterial flora occurs. You know, the bacterial flora, they are important for us because they cause the synthesis of vitamin K and some of the vitamin B complex also. And if the bacterial flora are suppressed, what happens is कि एक तो हमारी जो normal vitamin B levels और vitamin K levels हैं वो decrease होना शुरू हो जाते हैं, plus हमारी जो fungi जो वहाँ पे candida वगैरह हैं, they start gaining upper hand, तो candidial infections बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और बाकी जो बैक्टीरिया वहाँ पे normal commensals थे हमारे जो हमें harm नहीं कर रहे थे, they become harmful for us, they cause infections. तो tetracyclines में therefore super infections are very common, especially candidial infections वगैरह. Then we have corticosteroids. Corticosteroids, they are given mostly as an anti-inflammatory agent in rheumatoid arthritis, collagen vascular disorders, different infections. So
they cause a decrease in the host defense because they cause decrease in inflammatory process. तो host का defense जो होता है वो कम हो जाता है. So we can have patients with activated latent tuberculosis. Tuberculosis is one of the most common infections in the world and especially in Pakistan. And what happens is कि ये हम सबका exposure इसका हुआ होता है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा Ghon's complex बना हुआ होता है lungs में या कहीं ना कहीं. जब कभी भी हमारी immunity कम होती है तो suddenly it will flare up and it will turn into active tuberculosis. And therefore corticosteroids वालों को we have to be careful कि they do not develop one of these. फिर अभी तो ये side effect का मैं कह रही थी. अब next जो होता है वो toxic effects होते हैं. These are the result of excessive pharmacological action and mostly they are due to overdosage. ठीक है, overdosage सिर्फ ये तो हमें पता ही है कि लोग overdose करते हैं कि accidental हो सकती है. You don't know the dose of a drug which has to be given to a child. You give them an adult dose. तो उनके लिए वो toxic dose बन जाएगी. या people are suicidal and they try to commit suicide by taking all the drugs available in the home. अक्सर मैं जब वार्ड में थी तो मैंने देखा था कि patients would drink insecticides. अभी मैंने बताया वो रोडेंटिसाइड, ये जो चूहे मार गोलियां होती हैं वो खा के आ जाते थे. घर में अगर किसी का कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होता था तो एंटी हाइपरटेंसिव की ओवरडोज ले लेनी है. अगर कोई स्पेसिफिकली खुद खरीदते थे तो अक्सर ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स में से कुछ लेकर और डायज़ेपैम या कोई भी इस तरह की ड्रग की ओवरडोज ले लेते थे. होमिसाइडल में people mostly give other people with the intent of killing them. They would give something which is easily available. और वो आर्सेनिक हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है उस काम के लिए. और ऐसे इंसिडेंटली नेपोलियन बोनापार्ट की जो कैथरीन थी कहते हैं कि वो भी उसको सुबह सुबह ऑरेंज जूस में आर्सेनिक डाल के देती थी और उसके जब उसके बाद में एक्सह्यूम हुई इसकी बॉडी तो आर्सेनिक के बहुत ज्यादा क्वांटिटी विद द नेल्स एंड हेयर वर देयर बिकॉज शी हैड बीन वेरी स्वीटली पॉइजनिंग हिम विद द आर्सेनिक इन हिज जूस. जूस में इसलिए देनी पड़ती है कि अदरवाइज इट फ्लोट्स. इसी तरह ये जितनी पार्टी ड्रग्स वगैरह भी लोग देते हैं वो जूसेस में देते हैं कि ताकि उनका वो कर दें सही पता ना चले और उनका टेस्ट वगैरह जो है वो तो होमिसाइडल पॉइजनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स. मगर किसी को मारना हो तो ओवरडोज ऑफ इंसुलिन आई थिंक इज द सेफेस्ट. ऐसे ही बोल रही हूँ. फिर ओवरडोज कैन बी रिलेटिव. रिलेटिव ओवरडोज का ये मतलब है कि द पेशेंट हैज a drug which has to be excreted by the kidneys and normal patient में वो आराम से excrete हो जाती है. मगर अगर आप उसका patient जो है वो CRF का है, let's say chronic renal failure का है और उसको आप gentamicin दे रहे हो which is a drug used for prevention of anaerobic infections intra-abdominal surgeries, so you have to be careful and have to get the renal function test done before you give the drug because gentamicin in those patients will accumulate in the body क्योंकि उसने excrete किडनी से होना है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही तो ओवरडोज हो जाएगी. जो जेंटामाइसिन, टोरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, मिकासिन ये सारी जितनी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स लाइक यू नो दे आर ऑटोटॉक्सिक, रीनल टॉक्सिक एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कॉज करते हैं. ठीक है, तो रिजल्ट फ्रॉम थेरेप्यूटिक डोजेस भी हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं लाइक बार्बिटूरेट्स. बार्बिटूरेट्स का मसला क्या है कि दे आर वेरी गुड ड्रग्स. Anti-anxiety drugs भी हैं, they can be used for anesthesia, they can be used as as sedative hypnotics also. मगर इनमें tolerance develop हो जाती है. जब tolerance develop होती है, as you know, tolerance means that the initial dose of the drug which was used, it does not produce the same effect when it is given again and again. तो barbiturates के साथ tolerance की वजह से लोग फिर overdose इस पे भी कर सकते हैं and as a result of that they can go into coma. फिर digoxin overdose से complete AV block हो सकता है and the patient can die of the AV block if not corrected in time. Then we have in some people there is appearance of characteristic toxic effects of drug and these occur in patients who just had one single dose या therapeutic dose पे ले रहे होते हैं. अब ये जो intolerance to a drug है, it is basically a sort of genetic. ये हर बंदे में नहीं होती and everybody has a different
जेनेटिक्स सेटअप इसीलिए हर एक बंदे में ये कुछ लोगों में अपेयर होते हैं इफेक्ट्स और कुछ में नहीं होते. What happens in this is कि the patient is just taking a drug and the same drug will not have the same effect in other people. मगर triflupromazine कुछ लोगों में एक single dose of triflupromazine stelazine के नाम से it is available. People take it for anxiety etc. Muscular dystonia cause करेंगे and this muscular dystonia sometimes is irreversible. फिर carbamazepine थोड़ी सी डोजेस के साथ एटेक्सिया हो जाता है लोगों में और क्लोरोक्विन सिंगल टैबलेट ऑफ क्लोरोक्विन जबकि हम नॉर्मली अगर ये देते हैं फॉर मलेरिया तो 4 स्टैट 2 after 6 hours 1 twice a day for 3 days देते हैं तो इट कॉजेज वॉमिटिंग एंड ऑल्सो एब्डोमिनल पेन और स्वेयर किस्म का एब्डोमिनल पेन. तो these are effects which occur in people who are susceptible and it is not due to the fact कि ये ड्रग जो है ये खुद इतनी बुरी है मगर it just occurs because the people have genetic predisposition for these drugs to cause them in them. अभी इसमें अगर मैं मैक्सिलोन की बात भी करूं अगर मैक्सिलोन आप में से किसी ने कभी ली हो it is metclopramide एक एंटीमेटिक है जो हम कभी कभी कॉमनली दे देते हैं. अब इसमें भी ये होता है कि the person suddenly has dystonic reaction और ये bizarre effects हैं of some drugs और इसमें कोई खास जीनोटाइप भी नहीं है. You can't really predict it. इसमें barbiturates में excitement और mental confusion कुछ लोगों में होती है जबकि normally मैंने भी बताया कि कोमा और डेथ और quietness होगी. Quinine में quinine is also one of the drugs which is used for treating malaria. इसमें cramps, diarrhea, asthma, vascular collapse in individuals can occur. Then chloramphenicol के साथ idiosyncratic reaction इसको कहते हैं aplastic anemia can occur in rare individuals and ये जो bizarre side effects है ये जो idiosyncratic side effects हैं of drugs they can occur without any precedence. किसी ये नहीं है कि जरूरी है कि पहली दफा में हो जाएगा कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे में and they will occur and they will be so strange that you can't really point out कि ये इससे पहले कभी नहीं हुए तो इसमें क्यों हुए. And that is what I'm saying कि genotype कभी कभी it matters. ठीक है ना. फिर there can be drug allergies. आपको जैसे शुरू में मैंने बोला anaphylactic reaction with penicillin तो आपको पता ही है कि drug allergies जो है इसको drug hypersensitivity कहते हैं और they can occur in people and with smaller doses than normal. तो इसमें type 1 immediate जो होती है anaphylactic shock हो सकता है immunoglobulin E की basis है इसकी और the patient can die if not treated or iski treatment may be give them epinephrine. Here type 2 cytotoxic antibody that is IgG and IgM. Isme the complexes which form by which are the antigen antibody complex it goes and it causes activation of the hemolytic immunity and hemolytic anemia methyl dopa ke sath. This is an example of this type of reaction. Then we have the type 3 serum sickness. इसमें सीरम सिकनेस में इसको सीरम सिकनेस पहले तो कहा इसलिए गया था कि इट यूज्ड टू अकर इन पीपल हु वर गिवन वेरियस हाइपर इम्यून सीरम्स और ये स्पेशली एंटी वेनम वगैरह जब किसी को लगता था तब उनके साथ एंटी टेटनस के साथ. मगर बेसिकली इसमें भी क्या है कि IgG और IgM जो एंटीबॉडीज हैं दे फॉर्म complexes which can go and deposit in the joints and in the renal vasculature and they can cause failure of normal function of these organs and it is also very common. Then photosensitivity. Cutaneous reactions result from drug induced sensitization और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की और रिएक्शन में दो टाइप की है तो फोटोटॉक्सिक होते हैं और दूसरा फोटो एलर्जी हो सकती है. इसमें फोटोटॉक्सिक जो है वो अक्सर इस वजह से फोटोटॉक्सिसिटी होती है कि ड्रग या इसका जो मेटाबोलाइट है इट गोज एंड एक्यूमुलेट्स इन द स्किन. सर स्किन आपको पता है इट्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस और when it goes and accumulates there so there is a photochemical reaction resulting in local damage और sunburn सा बन जाता है erythema इसको कहेंगे ना. तो this erythema can be simply कि redness हो जाए, it can be local edema, it can cause blisters and it can also cause hyperpigmentation. अब इसमें tetracycline के साथ
अगर आपने पढ़ा हो तो स्पेशली कहते हैं फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस को कहते हैं कि वो पूरे गोल गोल सर्कल्स बने होते हैं. इट कैन अकर विद टेट्रासाइक्लिन, स्पेशली कहते हैं आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन के साथ ये हो सकता है. दे कैन आल्सो अकर विद फ्लोरोक्विनोलोन्स. फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ वैसे इंसिडेंटली लेटली आई हैव सीन अ पर्सन विद एपिडर्मल नेक्रोबायोलाइसिस एंड शी डाइड ऑफ इट. तो बहुत बुरे बुरे भी ये जो है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस इनके साथ हो सकते हैं. और यहाँ पर मेंशन नहीं है पर गोल्ड कंपाउंड्स में ओरोथायमोलेट, ओरेनोफिन ये यूज होते हैं फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस. दे आर पार्ट ऑफ द डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, डीएमआरस. अब ये जो डीएमआरस हैं इनका जो ये ग्रुप है गोल्ड कंपाउंड्स, दे कैन द गोल्ड बिकॉज इट इज यूज्ड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, बट द गोल्ड सॉल्ट्स आर वेरी वेरी इंसॉल्युबल. तो ये बॉडी में हर जगह डिपॉजिट होते हैं. इफ दे डिपॉजिट इन द under the skin, they cause severe phototoxicity. If they deposit in the kidneys, so they will cause proteinuria and later nephrotic syndrome. And if they deposit in the bone marrow, so granulocytosis, they can cause failure of bone marrow. इसीलिए अब they are on the way out. Gold compounds are not very commonly used. Or photoallergy जो है, that can be due to drug or metabolite and local cell mediated immunity cause करती है. Then there can be effects of side effects of drugs due to dependence. Dependence जो है वो drugs के साथ बहुत common है, especially drugs which alter our mood or feelings. ठीक है? And इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी द सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एफेड्रीन लाइक ड्रग्स जिनको कहते हैं, पार्टी ड्रग्स, कोकेन, इसके अलावा ओपियोइड ग्रुप जो है, ठीक है ना. तो ये वाली जो ड्रग्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. हमारे पास तो इफ यू लुक एट सिम्पैथोमाइमेटिक्स वी कैन यूज एम्फेटामीन्स, मेथाम्फेटामिन इसमें आती हैं, तो एम्फेटामीन्स आर यूज्ड एज drugs to decrease appetite. ठीक है, मगर अब तो they are banned from the market for this purpose. They are also used for restless leg syndrome type patients. They are also used for by certain students for attention deficit वो कहते हैं हमें हो रहा है, तो they start using it. But once they are hooked on it, they can't leave them. Or cocaine is the biggest one out of them, which is very very commonly used. And it causes psychological dependence and physiological dependence also. Opioids also cause psychological dependence and physiological dependence. The difference between physiological and psychological dependence is that psychological to hota hai ki one thinks you can't live without it, and physiological mein you cannot function without the drug. That is why once they stop the drug, they have to go into treatment centers and they have to be slowly tapered off the drugs that was causing the physiological dependence. Drug abuse is use of a drug for self-medication and in amount and manner that deviates from the approved medical and social patterns. Or drug addiction is compulsive drug use characterized by overwhelming involvement with the use of drug. और आजकल ये और drug habituation तो सब जो ऐसे ही है जैसे हम लोग हर वक्त चाय पीना चाह रहे होते हैं, कॉफी पीना चाह रहे होते हैं, ये that is something a little better. मगर now the use of ice आपने सुना ही होगा, it is on the rise and this is one of the sympathomimetic drugs. उसके बाद drug withdrawal reactions से भी side effects और adverse effects हो सकते हैं. This is due to the sudden interruption of therapy with certain drugs, and this causes adverse consequences. Most of them are used for a clinical condition, और वो जो clinical condition है उसके लिए यूज करते करते जब आप स्टॉप करते हो तो इन ड्रग्स की सडन विड्रॉल से ज्यादा बुरे इफेक्ट्स हो जाते हैं. मतलब अभी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट दे कॉज एड्रेनल इनसफिशिएंसी, अगर 21 डेज से कम में टेपर करें. बीटा ब्लॉकर्स में प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइपरटेंशन भी हो सकती है, एंड वर्सनिंग ऑफ एंजाइना हो सकता है. क्लोनिडीन में सीवियर हाइपरटेंशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, और इसी तरह और भी डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनके साथ ये सब कुछ है कि होता है. फिर ट्रैटोजेनिसिटी. ट्रैटोजेनिसिटी of a drug is the capacity of the drug to cause fetal abnormalities, and especially when it is given to the pregnant mother, or especially during the first trimester. First trimester में ऐसे समझें कि fertilization से implantation तक, conception to 17 days,
क्योंकि उस वक्त बिल्कुल पता ही नहीं होता कि द पेशेंट इज प्रेग्नेंट. दिस इज द वर्स्ट टाइम, एंड इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन दैट ड्रग, देन he or she will she will develop teratogenic changes in the fetus. फिर organogenesis जो होती है वो 18 days से 55 days तक हो रही होती है. This is most vulnerable period in which deformities are produced. और इसमें here I'd like to mention the thalidomide disaster in the 1929s. वहाँ ये होता था कि there was a drug thalidomide which was given to pregnant females to prevent the hyperemesis gravidarum या pregnancy की जो vomiting वगैरह की normal condition थी, इसमें हर एक को sort of देना शुरू कर दिया. अब उसमें हुआ ये कि mostly this feeling of nausea and vomiting is worse during the 3rd to 4th month. उसमें organogenesis का time था. All of the females who were given the drug, nearly all of them, they developed fetuses with microphilia. That means कि उनकी पाँव और जो थी limbs जो थी, they are very small with digits nearly attached to the small extremities. और ये thalidomide disaster बहुत अरसे से इसका अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि वो अभी वो बच्चे तो नहीं, अब तो बड़े हो चुके हैं and they are living a miserable life. और अब थैलिडोमाइड को इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे मार्केट में फिर से लाया गया है. और ग्रोथ डेवलपमेंट जो है मोर देन 56 डेज पे होता है. इसमें डेवलपमेंटल चेंजेस इतनी नहीं होती जितनी फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं. मसलन इफ यू गिविंग समवन वार्फरिन, the baby when he or she is born, they can have bleeding. Here we have mutagenicity and carcinogenicity. This is the capacity of drug to cause genetic defects and cancer. Chemical carcinogenesis generally takes a lot of time to develop. इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स themselves जो होती हैं वो म्यूटेजेनिसिटी भी कॉज कर सकती हैं एंड कार्सिनोजेनिटी भी. रेडियो आइसोटोप्स जो यूज होते हैं, स्पेशली आइसोटोप्स लाइक आयोडीन 131 121 जो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी कॉज कर सकती है. इसी तरह थैलियम स्कैन वगैरह जो करवाते हैं, बोन स्कैन्स, उसमें भी हो सकता है. फिर there are certain diseases which we cause, and these are called drug-induced diseases, and they also called iatrogenic diseases. Iatrogenic का मतलब है they are induced by the physician, that means us. And this is because once we give them drugs, we ask them to just keep on taking the drug, and we don't really educate the patient about when to stop or what to expect. मगर पाकिस्तान में ये मसला भी है कि if you tell the patient कि इसके साथ ये adverse effects होंगे, तो 90% of the people would not take the drug. तो इसमें salicylates या corticosteroids, they can cause peptic ulcer, phenothiazines, other antipsychotics can cause a Parkinsonian-like syndrome. और इसी तरह ये जो हम लोग मुतवाज़िर drugs किसी को दे रहे होते हैं, उसके साथ bleeding tendencies और ये चीजें भी बढ़ जाती हैं. अब एक और classification of adverse drug reactions के onset of event से की गई है. Acute onset हो less than 60 minutes, subacute 1 to 24 hours, and latent more than 2 days. Type of reaction से की गई है कि augmented, bizarre, chemical, delayed, exit, familial, genotoxic, hypersensitivity, and unclassified. और फिर severity of adverse drug reaction से हम इसको minor, moderate, severe और lethal adverse drug reactions में classify कर सकते हैं. What I'd like to again say is that I was asked to take a lecture on adverse drug effects of drugs. ठीक है? अगर आप इस तरह देखो कि आपने याद रखने हैं adverse drug effects और how to do that, क्योंकि हर drug मैंने पहले कहा nausea, vomiting, diarrhea से हर बच्चा शुरू करता है और हर बंदा शुरू करता है. You have to be educated to be able to predict the adverse drug effects. Educated का मतलब ये आपको पता हो कि pharmacologically which drug is going to be having its effect on which organ and how bad can it be. ठीक है? So if you go through pharmacology, I'll go through it in 5 minutes for you. So number 1, we have the autonomic nervous system. इसमें कौन-कौन सी drugs हैं? We have cholinergic drugs, anticholinergic drugs, sympathomimetic and sympatholytic. ठीक है? अब cholinergic drugs के साथ क्या-क्या side effects होंगे? And जब मैं अपने students को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ try to memorize the side effects or the effects or anything in a systematic way.
जिसका मतलब है कि फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, दैट मीन्स सबसे पहले CNS के साइड इफेक्ट्स, फिर eyes, then the nose is the start of the respiratory system, mouth is the start of the GI tract, then we have the thyroid, or that means endocrine, then the CVS, and after that go to the metabolic side effects, and after that the musculoskeletal ones, and after that if we have any skin or other side effects, ठीक है, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को भी ना भूलें। तो आपने एक लिस्ट बनानी है। अब मैं अगर कह रही हूँ कि कोलिनर्जिक सबसे पहला ग्रुप है, तो they'll cause increase lacrimation, they'll cause increase in salivation, they'll cause increase in the motility of the intestine, they can cause nausea, vomiting, diarrhea, तुम लोगों का बहुत फेवरेट है, and they can also cause increase urination and defecation, ठीक है। तो ये आपकी इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के साइन सिम्टम्स बन गए, साइड इफेक्ट्स इनके वही हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटी मोशन सिकनेस अफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, इट इज गुड इफेक्ट। देन दे कैन आल्सो कॉज retrograde amnesia, which is used as a good thing whenever the patient is undergoing a surgery. They can cause dry eyes, increase in the intraocular pressure. They can cause the antimuscarinic effects इनको कहेंगे, which is dry mouth, dry eyes, constipation, decreased urination, and these drugs again they become the atropine poisoning वाले sign symptoms worst पे जाके। फिर sympathomimetics में increase in the heart rate, increase in the और उसमें meiosis था और इसमें mydriasis है। उसके बाद if we are talking sympathomatics, increase attention span हो जाएगा, increase in the heart rate हो जाएगा, increase in the rate of respiration हो जाएगा, bronchodilation हो जाएगी, और they can also cause increase in the constrictor muscles of the GI tract. That means decrease in the defecation reflex. So basically, whenever you're talking about the common side effects of a drug, you have to go to every group of the drug and enlist के सबसे important side effects क्या हैं। अब ये list, it was beyond me to make it, and it is also beyond you to make it, but you have to always remember the important side effects of certain things. और वो important side effects के लिए the best would be to go group wise, और उस group का जो main drug है उसको use करते हुए, कि जैसे मैं sympathomimetic कह रही हूँ, I'm talking about epinephrine. When I'm saying anticholinergic, I'm talking about atropine. इस तरह करके आप एक एक ड्रग को एक एक ग्रुप में से निकालते जाओ और उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स याद करते जाओ। नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कभी भी मॉर्फिन के लिए यूज नहीं करना, इट कॉजेज नॉजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। पिन पॉइंट प्यूपल्स, इट्स मॉर्फिन। सेकेंड ऑप्शन, इट कैन बी एफेड्रीन, ठीक है। डायलेटेड प्यूपल, it can be death simply, and it can also be atropine, and it can also be a sympathomimetic effect, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपने डिफरेंट तरीके से अपने लिए खुद ही इन अ नटशेल करनी है, बिकॉज देयर इज नो इजी वे ऑफ गोइंग अराउंड इट, एंड आई थिंक I'll stop my lecture here because I'm just going around in circles now, and you can ask me whatever you want. Over to you. मैम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए हम क्या देते हैं? असल में आप इसको दो में डिवाइड अभी से दिमाग में कर लो ना, ठीक है। एक तो आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस कह रहे हो तो इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग कह रहे हो, मगर आजकल क्योंकि वॉर गैसेस की बात भी साथ ही सोचनी चाहिए ना, तो अगर तो ये वॉर गैस पॉइजनिंग की बात आप करना चाह रहे हो, सुमरीन और ये चीजें जो है ना, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस तक तो एट्रोपिन वुड बी द राइट आंसर। मगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉर गैसेस, तो आपने वो जो प्रेलिडॉक्साइन और वो चीजें ऑक्साइन्स जो हैं वो भी देनी है ताकि एजिंग ना हो,
एजिंग का मतलब ये है कि वो परमानेंटली एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो है वो अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो द पर्सन विल डाई, सिंपल सी बात है। जहां तक एट्रोपिन देनी है वो कब तक देते हैं, अगर वाकई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है विच इज पॉइजनिंग बाय वन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, तो उसमें आप तब तक देते रहते हो एट्रोपिन 0.5 मिलीग्राम आईवी जब तक प्यूपल्स जो हैं वो डायलेट नहीं होना शुरू हो जाते एंड पेशेंट भी थोड़ा सा बेहतर नहीं हो जाता, ठीक है ना। एंड यू आल्सो हैव टू गिव ऑल ऑफ देम सपोर्टिव ट्रीटमेंट। और इंसेक्टिसाइड में बेटे सबसे पहले चीज होती है कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, और वो सारा कुछ आपने रिमूव करना है ना, क्योंकि ये स्किन के थ्रू, इंटेक्ट स्किन के थ्रू भी ये चीज अंदर जा रही होती है। ओके मैम, थैंक यू। आवाज बंद हो गई, खैरियत वॉइस? एनी अदर क्वेश्चन? No ma'am, I guess there is Okay, no beta. question. Thank you very much. Thank you very much. Thank you ma'am, Allah Hafiz. Allah Hafiz, beta. So it means end of the session? Yes, I think so. Okay, all the best. Thank you so much. Thanks for your cooperation and very nice, Thank you. informative lecture. Allah Thank you Hafiz. very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.